So in our previous class हमें कौन पढ़थिलु ना organisms गुडी को गोटे taxonomical hierarchy बा गोटे systematic position रे सजाडी करी किना रखिबा पई बायोलॉजिस्ट माने कौन करथिले ना प्रथम स्पेसीस को आइडेंटिफाई करथिले देन ताको नेमिंग बा गोटे साइंटिफिक नेम रे नेमित करथिले तापरे स्पेसीस रो क्लासिफिकेशन करथिले एहा द्वारा कौन हला ना बायोलॉजिस्ट मानको पाखरे बहुत सारा इंफॉर्मेशन आसी गला अबाउट एनी काइंड ऑफ स्पेसीस सो एबे क्वेश्चन उठिला जे आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एवं क्लासिफिकेशन करबा जोगु स्पेसीस गुड़िकर जहाँ भी सब इनफॉरमेशन मिलला से इनफॉरमेशन गुड़ी को एबे बायोलॉजिस्ट माने स्टोर बा प्रिजर्व करिकिना केमती रखिबे सो दैट सेमान को जतेबेले से इनफॉरमेशन गुड़ी को दरकार हेबो सो सेमाने सेतेबेले सेटा को यूज करि परिबे सेति पई कोन करले ना बायोलॉजिस्ट माने इनफॉरमेशन गुड़ी को स्टोर करके रखिबा पई गोटिए मेथड बा गोटिए प्रोसीजर बा गोटिए टेक्निक बाहर करथिले जहा को नाकरण करा गला टैक्सोनॉमिकल एड्स सो टैक्सोनॉमिकल एड्स रो डेफिनेशन कोन आसीबो ना जो प्रोसेस रे बायोलॉजिस्ट माने बा जो मेथड रे बा जो टेक्निक रे बायोलॉजिस्ट माने इनफॉरमेशन गुडी को गोटिए स्पेसीस रो प्रिजर्व बा स्टोर करिकिना रखिले फॉर लेटर यूज से मेथड बा टेक्निक टाको कहा गला tomorrow taxonomical aids. So now let's see how can we define these taxonomical aids. So taxonomical aids are the collection of samples that preserved organisms that are helpful for extensive research. यार माने कौन ना प्रिजर्व हेतिबा ऑर्गेनिजम्स गुडी करो सैंपल लो कलेक्शन टाको कुहा जाउची टैक्सोनॉमिकल एड्स जहा द्वारा कि बायोलॉजिस्ट माने परे एक्सटेंसिव रिसर्च करि परिबे और इन अदर वर्ड्स कैन से दैट the procedure or technique by which biologists store or preserve some information about identification, nomenclature and classification of a species for later use, then that type of technique is known as taxonomical aids. So let's see how many types of taxonomical aids are there or how many type of procedures are there in order to store the information of taxonomy of a species. And these are, first is herbarium, second is botanical gardens, and third is museum, and the fourth is zoos, and the fifth is about Chse. So let's discuss these things briefly. So जो टेक्निक द्वारा स्पेसीस गुडी करो टैक्सोनॉमी रो इन्फॉर्मेशन गुडी को स्टोर करिकिना रखी हेबो से प्रोसीजर गुडी को होची हर्बारियम botanical gardens, museum, zoos and Chse. Let's see first technique and that is herbarium. Let's see herbarium कौन. So herbarium जिते बड़े हमें नाट ही सोचो then आमो माइन को गोटिए word आछी जोड़ा के होची herb and herb or herbal जहाँ के हमें सर्वदा गोटिए plant पाखरु पाई थाउ not from animals. So herbarium रो माने होची collection of plant specimen जहाँ रो माने होची जे plant गुडी को रो collection टाको herbarium कहा जाए बट किसी कंडीशन अप्लाई हेबो वो जो प्लांट गुडी को एज ए स्पेसिमेन हर्बारियम रे रहिबे एंड से गुडी को होची जे प्लांट गुडी को प्रेस्ड हेतिबा दरकार डेड बा मृत हेतिबा दरकार ड्राइड बा सुखला हेतिबा दरकार एंड कि समान गोटे प्रिजर्व्ड हेतार गोटे स्पेशल सीड्स रे सो वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन that are pressed, dead, dried and preserved on special sheet that is known as herbarium. Or we can say that a kind of process through which plant specimen are pressed, dead and preserved संरक्षित on a special sheet, then that technique is known as herbarium. And remember herbarium sheet सहित तार डेट रहिबो मींस को डेट रे से स्पेसिमेन ता मिलिथिला नेक्स्ट प्लेस ऑफ कलेक्शन मीन को जगह रो प्लांट रो स्पेसिमेन ता मिलिथिला जो स्पेसिमेन ता प्रिजर्व करिकिना रखा जिवो तार इंग्लिश नेम लोकल नेम एवं साइंटिफिक नेम मध्ये लेखा जिवो तार फैमिली मध्ये लेखा एंड सेही प्लांट स्पेसिमेन ता को जे कलेक्ट करिथिबो फॉर एग्जांपल रॉयल बोटानिकल गार्डन इंग्लैंड रे रही जोटा कि गोटे हर्बारियम नेक्स्ट माद्रास हर्बारियम जोटा कि कोयम्बटूर ठारे रही इंडिया रो एटा मध्ये गोटे हर्बारियम हर्बारियम ऑफ नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जहा कि लखनऊ रे रही यूपी ठारे से मध्ये होची गोटे हर्बारियम दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ हर्बारियम नाउ लेट्स सी आवर सेकंड टेक्निक दैट इज बोटानिकल गार्डन्स सो जते बेला हमें नाटा कहूछु देन सेटारो किछि आइडिया आछि जे ऑब्वियसली सेटा गोटे गार्डन हेथो एंड जोथरे हमें बोटानी रो माने तो जानिछु बोटानिकल कोइ माने ऑब्वियसली कोन बोटानी रो माने होची कोन स्टडी ऑफ प्लांट मीन्स प्लांट रो गार्डन हेथिबो तो नाटारो हमको किछि आइडिया मिल गला ओके सो एबे देखिबे तारो एग्जैक्ट मीनिंग कोन हैला सो यू आर राइट एटा होची गोटे प्रकार गार्डन जो थरे कि डिफरेंट काइंड्स रो प्लांट्स को लगा जाय करिकना सेगुडी को ग्रो करा जाय बढ़ा जाय सेठी कोन पाई ना साइंटिफिक रो रिसर्च पर्पसेस पाई सो या को कहा गला तमरा बोटानिकल गार्डन्स सो वी कैन से दैट ए काइंड ऑफ गार्डन वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ
plants grown for scientific research purposes that is known as botanical garden. यार माने कौन ना एमती गोटे गार्डन जो थे कि विभिन्न प्रकार गछ लगा जाए एवं बढ़ा जाए कौन पाई ना साइंटिफिकली रिसर्च रे यूज करबा पाई तो सेही परिका गार्डन को कहा जाए बोटानिकल गार्डन बट एठारे केवल से प्लांट्स गुडी को रिसर्च केस रे यूज करा जाए नहीं से गछ गुडी को बाहर थिबा सीड्स बा मंजी गुडी को मध्य से गुडी को बोटानिकली रिसर्च केस रे यूज करा जाय थाए फॉर एग्जांपल लालबाग गार्डन जोटा की गोटे बोटानिकल गार्डन जो थे कि विभिन्न प्रकार गछ लगा जाय करिकिना सेही गछ गुडी को विभिन्न प्रकार रिसर्च केस रे यूज करा जाय जोटा की रहिछि बेंगलुरु हम इंडिया रो सेमतिका रही नेशनल बोटानिकल गार्डन जोटा कि यूपी रो लोकनोट रे प्रेजेंट रही सेटा भी मध्य गोटे होछि बोटानिकल गार्डन सच एज मैन बोटानिकल गार्डन जोटा कि मॉस्को ठारे रही रूसिया रो so these are some examples of botanical garden. Now let's see another method of taxonomical aids and that is museum. So museum कौन मे भी समझते जानी थे कहीं म्यूजियम तो बहुत लोग जानते एग्जिबिशन पाई yes or not yes okay. So you are right तो सेठारे स्टूडेंट्स कौन होता है ना सेठारे विभिन्न प्रकार स्पेसिमेन गुडी को रखा जाय थाए प्रिजर्व करिकिना से एनिमल्स रो हो बा प्लांट्स रो हो yes or not yes. तो आमे जहाँ कहलु आमे ताको लिखिबा और जहाँ भी तुम म्यूजियम रे देखो से गुडी को सब प्रिजर्व करा हे करिकिना रखा थाए मींस संरक्षित तो करिकिना रखि थांती that may be से कौन से एनिमल्स रही पारे बा कौन से प्लांट स्पीशीज रही पारे yes or not yes and the most important thing कि सेटा एग्जिबिशन पे रखा जाय थाए so we can say that museum is the collection of preserved animals and plant specimen and exhibited to public and that is known as our museum. So आ कौन देखो पहले म्यूजियम रे ना देखा जाय जे जहाँ भी स्पेसिमेन रखा जाय थाए से स्पेसिमेन गुडी को गोटे गोटे कंटेनर्स बा कौन से गोटे जार रे रखा जाय थाए yes or not yes खाली जार टे रखिबा द्वारा कौन सेटा प्रिजर्व हे करिकिना वर्ष वर्ष पर्यंत रहि परिबो नहीं तो से स्पेसिमेन गुडी को प्रिजर्व बा संरक्षित रखिबा पई सेथिरे किछि प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन यूज करि थांते समाने बट also be preserved as dry specimen किछि स्पेसिमेन को ड्राई करिकिना मध्य से माने म्यूजियम रे रखि थांती फॉर एग्जांपल नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री जोटा कि हमर न्यू दिल्ली रे रहिछि जोटा कि गोटे म्यूजियम अनदर एग्जांपल होछि इंडियन म्यूजियम जोटा कि हमर कलकत्ता रे रहिछि सो वी कैन से दैट ए काइंड ऑफ टेक्निक थ्रू व्हिच एनिमल्स एंड प्लांट स्पेसिमेन आर preserved and mostly used for the exhibition. That technique is known as museum. Now the fourth technique of taxonomical aids is zoos. Zoos तो समझते जानते हो जूस हूँ गोटे प्रकार प्लेस गोटे प्रकार जगह जो थे कि वाइल्ड एनिमल्स गुडी को मीन्स अन्य जीव जंतु गुडी को आनी करिकिना रखाई थाए गोटे प्रोटेक्टेड हेइतिबा एनवायरनमेंट भितरे अंडर ह्यूमन केयर मीन्स जूस हूँ एमती गोटे प्लेस जो थे कि वन्य जीव जंतु गुडी को आनी करिकिना रखाई थाए गोटे प्रोटेक्टेड हेइतिबा एनवायरनमेंट रे जो थे कि ह्यूमन बीइंग माने सेमानकर केयर नियंती. So we can say that zoos is a technique through which wild animals are kept in a protected environments under human care. That technique is known as zoos. Another is collection of skeleton of animals is also present there. So due to this technique हमको कौन help मिलिला? For example, अलीपुर जू कलकत्ता जोटे कि वेस्ट बेंगल प्रेजेंट होइछि. Similarly, चेन्नई स्नेक पार्क जोटे कि तुम तमिलनाडु रे प्रेजेंट होइछि से मध्य गोटे जू. नेशनल जियोलॉजिकल पार्क जोटे कि तुम दिल्ली रे रहिछि सेटा भी मध्य होइछि गोटे जू रो एग्जांपल. Now last and the final technique of taxonomical aids and that is key. Basically key is used to identification of plants and animals means a kind of technique in order to identifying a species. That technique is known as key. ओटा की टेस्ट हेइ थाए organisms मानकर similarities and dissimilarities characters उपरे and remember this each statement of key is known as lead. So this is all about taxonomical aids. So see you on your next class that will be tomorrow. So till then take care and bye bye.